दोस्तों देख सकते हैं ये एक 12 वोल्ट की एलईडी लाइट है। ये इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ख़राब हो चुका है। तो अभी इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो अपनी घर पर। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर जो एलईडी लाइट है वो सारा जल चुका है, कि इसके अंदर 2 ही एलईडी लाइट अभी चालू है। तो चलो इसे हम ट्रांसफार्मर से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इससे हम कितने चालू है या बंद है, इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया तो इसके अंदर 2 लाइट अभी एलईडी जल रही हैं। तो अभी इसके अंदर हम नया इंस्टॉल करने वाले हैं, तो अपने घर पर ही अपने बना सकते हैं। और वीडियो को लास्ट एंड तक बने रहना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। आपको वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं इसके अंदर न्यू एलईडी इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं।